In the last classes, we were going with the probability, and I have said in the probability that probability of an event can be found out with the help of event should be in the numerator, and then sample space should be in the denominator, and sample space means total outcome, and then event, it means it is what has been asked in the question, and then sample space you will be able to get. I said, कहाँ पे मिलेगा sample space? In the starting, understood? So thereafter, I said we have understood mutually exclusive events. Yes, means when there is no common thing, it is mutually exclusive. And then I said that independent events we understood. It means I said that yes, occurrence or non-occurrence of one event does not affect the occurrence or non-occurrence of other event. And we have seen some understanding how to do the question of what is a probability related to, I said that dice we have seen. I said now the sample space, so dice questions we have seen some questions like this, and now we are going to see the when we'll throw two dice, then what will be there. I said that two dice, when the two dice will be thrown, what will be the sample space? When I was throwing one dice, sample space is what? Number of sample space is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So when I throw second dice, sample space of the second dice will be also. Yes, but you know that we are throwing two dice at a time, yes or not? Or the same thing can be said as one dice has been thrown twice, yes or not? It means now the sample space क्या होगा? 1, 1. First पे यदि 1 आया तो second पे 1, 1, 2. First पे 1 तो second पे 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Then 2 के साथ होगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Similarly we have, yes, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Until 6, 1, 6, 2, 6, 3 till 6, 6. So there will be how many total sample space? 36. Means when I am throwing, I said that it means I said that there will be 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Another could be 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Another it can be 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Another would be 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Another it could be 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Another it could be 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 and 6, 6. So the total number of sample space is how much?
1 डाइस फेंका तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना था 6 और 2 डाइस फेंका तो when I have thrown then I'll do what 6 square लिखूंगा yes and when I will throw 3 dice then what will be the sample number of sample space 216 6 cube yes or no 2 dice फेंका तो 36 and then 3 dice कैसे पता चला how we came to know about 6 1 dice 6 to the power 1 2 dice 6 to the power 2 3 dice 6 to the power 3 क्योंकि आपस में सब क्या है मल्टीप्लाई हो रही है ये एक 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा उतना ही एंड सिमिलरली अनदर डाइस विल बी देयर तो ये सारे फिर नेक्स्ट 6 से मल्टीप्लाई होंगे सो देयर विल बी 216 डाइस अंडरस्टूड नाउ द माय क्वेश्चन इज अब आपको करना है क्वेश्चन मैं ये क्वेश्चन करके केवल दिखाता हूं इफ केवल ध्यान से सुनेंगे a person has thrown 2 dice okay then what is the probability of coming sum 7 sum खेलते होंगे ना लूडो यस or not तो sum 7 तो कैसे sum 7 बनेगा 6 1 3 yes किधर yes or not तो हमने क्या बोला yes probability of an event when I throw 2 dice coming of sum 7 तो सैंपल स्पेस सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा हमेशा आदत बनाना है यू शुड हैव एन हैबिट टू राइट number of sample space in the denominator and then how many 7 6 so what is the probability I said that 1 by 6 so out of 6 में से एक आने का चांसेस रहेगा हमेशा एक बार 2 5 3 4 अंडरस्टूड लेकिन इन दिस क्वेश्चन में क्या है व्हाट इज द ये क्या बोल रहा है फर्स्ट डाइस पे क्या हो 1 नंबर सेकेंड डाइस पे अदर नंबर आई सेड दैट 6 1 क्लियर एंड देन वही सेम चीज यहां पर 1 6 इसका मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यस और नॉट इफ द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट देन हाउ मेनी टाइम्स 7 कैन 6 और 1 और 6 तो एक ही हो गया ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट ना तो 6 1 और 1 6 तो एक ही है तो क्वेश्चन में रहेगा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी व्हेन द 2 डाइस हैज बीन थ्रोन देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कमिंग ऑफ सम 7 व्हेन द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट तो आई सेड दैट 6 1 5 2 4 3 बस ये 3 होंगे क्योंकि रेस्ट इट इज इन सेम ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट तो हमने क्या बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 7 व्हेन आई सेड दैट ऑर्डर इज देन आई सेड 36 सैंपल स्पेस 36 इज व्हाट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एंड इवेंट विल बी ओनली 3 क्योंकि 4 3 बोलो या 3 4 both are 5 और 2 2 और 5 both are same when the order is not important when the order is important तो first dice पे 6 second dice पे 1 then in that case what will be there understood so the answer will be I said that 1 upon 12 right now the next question अब आप लोग कर लेंगे ना समझ में आ गया तो मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ओके सो आई सेड दैट अ पर्सन हैज थ्रोन 2 डाइस a person has thrown 2 dice
Then find out the probability first sum 7, sum 8, sum 8. Clear? Sum कितना हो? Second question, sum 8 order is not important. Sum 8 order is not important. Next question, sum 11 order is not important. इसी के आगे आपका आंसर भी बनता चला जाएगा. नेक्स्ट आई सेड एटलीस्ट सम 8, एटलीस्ट सम 8, एट मोस्ट सम 3, इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. नेक्स्ट, on the first dice even number दो डाइस पे के, लेकिन हमें रेस्ट्रिक्शन किस पे दिया है? फर्स्ट डाइस पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, on the first dice even number and on the second dice odd number. Next, on the first dice prime number and on the second dice even number.